अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा उमर और 16 फरवरी 2024 को मेरी फिल्म आ रही है टक्साली गेट। एज एन एक्टर तो मैं हूँ उसमें, बट मेरी पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर। तो इस साल बहुत कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं और ये जानने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, देखते रहिए समथिंग हॉट की ये वाली एपिसोड। Assalamu alaikum, this is Amna. You're watching Something Hot. This is Hot Talk, a conversation with Ayesha Omar, who's here today. And we're reconnecting after our last interview. Yes. So much has happened. I know. 1.5 साल हो गया ना डेढ़ अपना? साल हो गया है. I think so. हाँ. हाँ. और आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? इसलिए कि आपकी फिल्म आने वाली है, जिसका नाम है टक्साली गेट, जिसका जो ट्रेलर और टीजर है वो कोई इंतहाई कंट्रोवर्शियल किस्म का है. कंट्रोवर्शियल है? नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. तहलका तो जरूर मचा है, जो तहलका मचा है. एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट ओ माय गॉड, इट हैज क्रिएटेड वेव्स इन सर्कल्स जिनका मुझे अंदाजा नहीं था. लाइक द बर्गर सर्कल्स, मेरे दोस्त जिनको कुछ पता नहीं होता मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है. हाँ. एंड अभी आई वाज इन लाहौर फॉर 10 days आल्सो, एंड एवरीबडी आई मेट, एवरी फ्रेंड, कुछ लोग मैं 10 साल बाद कुछ फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड्स को मिल रही थी, and they knew about it and they were like, wow, Aisha, this film looks amazing. And you're producer on it. Yes, okay. You're a producer on Taxali Gate. Yes. But Aisha, you've also been very busy for the last 1 year. I have. think काफी सारी फिल्में आई हैं, आपकी films भी आई हैं. And you know, you've been doing television as well. And you've been involved in music scene as well. And you've launched your own fashion label, which you're wearing today. Yes, this is from my new Ramzan collection, जो अभी आई नहीं है, बस आने वाली है. Nice. अभी आयशा ने एक अपना गोल्ड एक कंट्रैप्शन पहनी हुई थी चेहरे पे, वो उतार दी. मैंने कहा नोज चेन. फिर हमने कहा क्या यार, आप लोगों ने फिर कहना है कि आप कोई क्या लग रही हैं, गाय भैंस. गाय भैंस लग रही है. आप गाय भैंस लग नहीं सकती, लेकिन चलें ठीक है. बकरा ईद पे पहनेंगे. बकरा ईद पे पहनेंगे. गुड आइडिया. सो लॉट्स टू डिस्कस. शुएब मलिक की शादी हो गई, मुबारक हो आपको यार. मुबारक हो शुएब को, मुबारक हो सना को, एवरीबडी हु डिसाइड्स टू गेट मैरिड. और मुबारक हो सानिया को और उमर को भी. कि मुबारक हो क्यों? I mean, I hope they're happy. Yeah, but exactly. नहीं, मुबारक हो उन लोगों को जिनकी डिवोर्स भी हुई, अगर वो खुश हैं, they're happier. देखिए, I am all for finding your happiness wherever you can. If you're in a marriage with somebody who's interested in somebody else, फिर वो शादी खत्म हो जाए तो मुबारक हो ना. फिर इसलिए मुबारक दे रही हूं. इस पे मैं बिल्कुल इसलिए कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एक्चुअली कोई फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स किसी की पर्सनल लाइफ के ना पता होते हैं और ना मुझे याद रहते हैं. इफ यू टेल मी समथिंग टुडे, आई स्वेयर आमना, मुझे अगले हफ्ते नहीं याद होगा. आई बी लाइक रियली. बट ये वो वाली कॉन्वर्सेशन होने वाली है, लेकिन इससे पहले कि लोग सोचेंगे ये बड़ी कोई नॉन सीरियस कॉन्वर्सेशन है. नो, इट्स नॉट. इट्स अ सीरियस कॉन्वर्सेशन ऑन सिनेमा टुडे. बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. ओके. कि जब ये मेरी शूट आई थी जी 2021 में. 21 में जी. अच्छा, मुझे तो भी नहीं याद. एंड एक्चुअली हमारे मीडिया ने उसका इतना बिल्कुल बतंगड़ नहीं बनाया था. अक्रॉस द बॉर्डर 1 साल बाद उसका बतंगड़ बना. एंड आई, बिकॉज इट वाज सो, those rumors were so baseless. I didn't like go clarifying them. तो वो अब खुद ही लोगों को पता चल गया है कि भाई मेरा तो कोई रिश्ता नहीं था, ना ताल्लुक था. मेरे तो वो दोस्त थे और अभी भी है. बिल्कुल ठीक है. उस वक्त भी आप बड़ी चिल्ड आउट थी. जब हम मिले थे उस वक्त भी बात हुई थी. You were quite chilled out. Of course, yeah. But anyway, we're here today, Ayesha, to talk about cinema. Pakistani cinema. Now you're somebody who has a world view. आपने दुनिया देखी है और हमने आपको दुनिया देखते हुए देखा है. इंस्टाग्राम पे आपने दुनिया देखी है. एंड you've got experience behind you. You're a producer on Taxali Gate. हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि एक साल में बहुत सारी फिल्में आती हैं. फॉर एग्जांपल 2022 में बहुत कमर्शियल हिट्स आई, इंक्लूडिंग मौला जट, राइट. एंड एक साल जरा सा क्वाइट होता है, उसमें लोग फिल्में बना रहे होते हैं. तो अब हमारा मशहूर हो गया कि जी एक साल हम फिल्में बनाते हैं और एक साल रिलीज करते हैं. वो वाला ट्रेंड एक बन गया है. दिसंबर से जो फिल्में आनी शुरू हुई, फॉर एग्जांपल गुंजल, चिक्कर हमने देखी, वखरी देखी हमने, नायाब रिलीज हुई है इस वीकेंड पे, और अब टक्साली गेट आ रही है. कैन आई कॉल देम आर्ट हाउस फिल्म्स?
Uh, it's a bit of parallel cinema. It is, right? The reason why I'm calling them art house films is because they obviously have a purpose. They're a bit adventurous in their treatment of cinema. They're not exactly Completely commercial films. Yeah. तो पैरेलल सिनेमा उसको ही कहते हैं, कह सकते हैं. टक्साली गेट भी वैसी ही फिल्म लग रही है. Taxali Gate is not parallel cinema. It's not. Only. It's That was very my commercial question. also. Okay, it's a commercial उसमें film. आपको डार्क ह्यूमर भी मिलेगा, आपको कॉमिक मोमेंट्स भी मिलेंगे, आपको एंटरटेनिंग मोमेंट्स, there's emotion, there's thrill, there's mystery. So it's a bag full of different emotions. Yeah, and very powerful acting. Oh, वो नजर आ रही है. मैंने फिल्म 3 दफा देख ली है. Really? Different stages पे, obviously. Obviously, you know, पहले पहला कट, फिर थोड़ा सा. भूल गई कि आप प्रोड्यूसर ने, of course आपने देखी. And of course, you can never be completely satisfied with your work. Yeah. I'm not. अभी तो शुरुआत है, अभी तो सीखना शुरू किया है. कुछ I do regret कि कुछ कैरेक्टर्स के लिए हमें और सोचना चाहिए था कि उसकी कास्टिंग के लिए, जिस तरह मौला जट में. And I really want to point this out. And it's commendable. बिलाल अशारी मेरे बचपन के दोस्त हैं. In fact, उनका जो पहला म्यूजिक वीडियो था, जब वो आए थे वापस कॉलेज से, तो उन्होंने जब शूट किया था, कॉलेज के हमारे फ्रेंड्स गा रहे थे. I was in it. So I worked with Bilal. First thing he ever shot. And तब से लेके अब तक मौला जट, वो जो एक कैरेक्टर होता है ना उनके स्क्रीन पे, उस एक कैरेक्टर की उतनी ही इम्पोर्टेंस है. यू नो, कोई पीछे अगर दुकानदार भी खड़ा हुआ है ना, वो भी पूरा कैरेक्टर में होगा. सो मेरी भी ये हसरत है और थी कि एवरी कैरेक्टर इन द फिल्म हु इज पार्ट ऑफ द स्टोरी हैज टू बी अ ब्रिलियंट परफॉर्मर. ठीक है, अब हमारी फिल्म बहुत लिमिटेड बजट में बनी है, बहुत लिमिटेड बजट में. इससे ट्रिपल बजट होता तो एक नॉर्मल बजट होता. राइट, हमने उसके 1/3 में बनाई है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इम्पोर्टेंट थिंग्स. सो ऑब्वियसली हमें अपनी मेन कास्ट तो हमें अपने मतलब की मिली, बट कुछ सीन्स आगे पीछे अगर हो रहे हैं तो वी वुड हैव हैड टू कॉम्प्रोमाइज कि उस वक्त हमने ले लिया किसी को. Having said that, everybody's performance is excellent. But मेरी हसरत होती है कि जैसे I would have loved to take, you know, Napa kids. But we couldn't. We were shooting in Lahore, and we couldn't fly so many people there. So कोशिश तो यही थी, but let's see. Let's see. But okay, so in a nutshell, story क्या है टक्साली गेट की? So Taxali Gate, the name says it all. टक्साली गेट हीरा मंडी का पुराना नाम है, क्योंकि वो गेट का नाम टक्साली गेट है. यू नो, लाहौर हैज मेनी दरवाजाज. में हले 12 दरवाजे थे, 12 हैं, अब नहीं रहे. हाँ, तो सो इट्स सेट इन दैट एरिया, एंड वहाँ उस इलाके के जितने कैरेक्टर्स हैं वो सब मिल के इस स्टोरी में उन्होंने एक पार्ट प्ले किया है. सो दे आर ऑल कनेक्टेड. कहानी जो है वो जैनब, एक लड़की है उसकी है. पोस्टर आ गया है जैनब का. जैनब के साथ कुछ होता है. Which is you. No, you play I'm Zainab. not Zainab. You don't play Zainab. Zainab is a college going girl. Okay. अब मैं अपने आप को college going girl तो बना सकती थी, लेकिन नहीं. No. Yeah. Not even college. She's basically like a 18-19-year-old. Right. 19-20-year-old girl. मेहरबानो is playing Zainab. Okay. Right? So plot जो है वो Zainab के साथ कुछ होता है, लेकिन उसकी जिंदगी में जितने जो 4 मेन ये कैरेक्टर्स जुड़े हुए हैं, which is नैयर एजाज, who is her father, right, and यासिर, जो उसके चाचा है, बाप का छोटा भाई, right, and me, right, who is मैं टक्साली गेट में रहने वाली एक तवाइफ हूँ. And so how these 4 people are affected, how they all come together, right, for what happens to her, and उनके साथ फिर वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं. So it's basically shedding light on the social construct. Right. The layers of एक सोसाइटी में जो layers हैं, आपके income brackets, आप privileged हैं तो कैसे treat हो रहे हैं. You don't have connections, you're not privileged, you're not from that class. तो आपके साथ क्या treatment हो रही है, आपको इंसाफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा. Then the most important thing that we're speaking about is consent. We're talking about consent.
and we're talking about rape, we're talking about justice, we're talking about also how people are treated, not just women, men also. So इसमें जो rights की बात हो रही है वो सिर्फ औरतों के हकूक की नहीं है, इंसानों के हकूक की बात हो रही है इस फिल्म में. And it was just a privilege to be a part of this project. Should I tell you how this happened? Yes, of course, of course. So Abu Aliha, who is the director, And you've worked with him before. हाँ, कुकड़ी में. तो कुकड़ी के बाद एक साल के बाद Abu Aliha came to me with another film. And he's been very active. He's been releasing films very regularly. He's a hard worker. Yeah. He's a hard worker. तो अली भाई आए मेरे पास एक और फिल्म के साथ, सुपर पंजाबी. It was a comedy film. Yeah. And he said, I just want you to do this character. Iftikhar Thakur was producing it. तो वो lo and behold नहीं मैं कर सकी. Like I was almost going to do it, but something happened that I didn't do it at the end. And I said, I'm so sorry Ali bhai, you know, I mean नहीं कर सक रही है, कुछ नहीं होता, एक और फिल्म है. वो भी मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ. तो मैंने कहा अच्छा वो क्या है? So he told me the story. I said, oh, this is great. And he said कि आपका character है मुस्कान का, and it's a great character, and I know you'll love it, and I know you'll do it well. I said अच्छा, मैंने सुनी, I loved it. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, okay, I'll do this. 3 months later I called him, सुपर पंजाबी रिलीज हो गई, जल्दी से बन के रिलीज भी हो गई. So I'm like क्या बना उस फिल्म का? अच्छा नहीं, उस वक्त रिलीज नहीं हुई थी, sorry. तो 3 महीने बाद I called him. He had finished shoot. He said वो आयशा वो जो इन्वेस्टर थे वो चले गए मुल्क से बाहर, तो now I don't have an investor for this film. Okay. I said oh my god really? यही होता है, पैसे नहीं है. तो मैंने कहा अच्छा मैं पूछती हूँ अपने कुछ अमीर दोस्तों से, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है फिल्म में लगाने के लिए. So I knew somebody, a friend of mine who's also a patron of the arts, and he did invest in a web series also पहले. And I said यार ये एक फिल्म है, would you like to invest in it? And he's like अच्छा, who's the director? I said this guy. He said मैंने तो नहीं इनका सुना, and मैं क्यों इसमें पैसे डालूं जब मुझे नहीं पता if it's going to be successful, मेरे पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे. मैंने कहा यार I am telling you that it's a very good story. He's like तुमने कभी फिल्म बनाई है? I said नहीं. He's like तुम्हें कैसे पता? So I said हाँ, but I have a gut feeling that it's going to be a good film. तो कहते हैं अच्छा okay, why don't you produce it? I said I can't produce it. Like, I don't know how to produce films. He said just come on board and take over, and we'll have 2 producers. We'll get Bakas Rizvi also, who's produced stuff. So I said अच्छा चलो. फिर हमने बिस्मिल्लाह की और हमने शुरू किया project, and I took this film up like my own child from the beginning. Casting, फिर हमने बैठ के casting की. लेकिन पैसे नहीं लगाए खुद से? not a rupee. तो फिर producer का क्या role होता है? So basically a producer can be an investor, right, but doesn't have to be an investor. Okay. A producer is like somebody जिसको आप कहें ये आपके पास पैसे हैं, ये आपके पास 3 करोड़ रुपए हैं, make it happen. इसमें आप फिल्म बनाएं. ठीक है. So the producer is the one who decides किस चीज में क्या बजट है, किस treasury है आप फिल्म की, आप कह सकते हैं. हाँ. तो वकास handled all the technical stuff, you know, लोगों की payments, production teams के साथ deal करना, and फिर हमने casting की. Obviously we had a very small budget, limited. तो I was like okay, मैं अपनी acting fees को कम कर देती हूँ, तो मैंने उसको less than half कर दिया. अच्छा, small budget तो नहीं पूछूंगी क्या था, but what is a big budget for a Pakistani film? Yeah, it depends now where you're shooting. अगर आप बाहर के मुल्कों में shoot कर रहे हैं तो उसका budget बढ़ जाता है. Like London नहीं जाऊंगा तो उसमें आप you know आपकी traveling है, tickets हैं, stay है, it's obviously it'll be big. But a small limited budget आप समझे 3 करोड़, 2-3 करोड़, 3-4 करोड़ की फिल्म. Right. And that's also मतलब आपका mostly जो your budget is going towards the camera crew. Absolutely. Right, and your post production artist and the actors fee. Yeah. So we did not put up any sets. ठीक है, sets भी बहुत महंगे होते हैं. हमने set नहीं लगाए, हमने on location actual जगहों पे shoot किया. वो जो आपको एक gorgeous सी हवेली भी नजर आ रही है ट्रेलर टीजर में, वो भी actually हीरा मंडी में हवेली है. अच्छा, now let me cut you here a little bit. Is it like
based in today? Is it a today story? Today. Because It's not pre. because Hira Mandi doesn't exist today, I know. and there are no tawafs in Hira Mandi Yes, today. you'll see that. Okay, okay. हाँ, तो वो जो आप grandeur expect कर रहे हैं पुराने ज़माने वाला वो नहीं है. It's very gritty and raw. Okay. So you can say today, 10 साल पहले भी हो सकता है, but the last 20 years. Okay. Not before that. The last 15-20 years. ठीक है. Right, and yes, हीरा मंडी अब बिल्कुल नहीं है. non-existent हो Yeah, गई है. absolutely. And वो सब move हो गए हैं in other elite areas. गुलबर्ग एंड मॉडल टाउन में बार-बार कहती हूँ, जब मुझे कहता है हीरा मंडी से सब तवाइफ हैं और all उन्होंने it's actually all बताया है हमें. it's गुलबर्ग वहाँ की and जो खवातीन जिनको हम मिले, वहाँ की कुछ औरतें जो आई, we actually got women from there to play characters, and they said कि वो तो सब चली गई हैं. चली गई हैं. और तो हाँ, तो इसलिए ये जो कैरेक्टर है बड़ा अच्छा किसी ने कहा, बड़ा अच्छा किसी ने कहा. Somebody told me once that this was the Zaya crackdown on हीरा मंडी. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक हीरा मंडी बंद की और कई खुल गई, क्योंकि वो फैल गया ना सारा. एक बंद की तो कई खुल गई. तो अब खैर I can't comment on that either because मुझे नहीं facts, figures और statistics कुछ पता. बट हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च उस इलाके की करके कि कितना एग्जिस्ट करता है, अब क्या है, क्या वहाँ का सिस्टम है, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द लॉ ऑफ द जंगल ओवर देयर. सो या इट्स वेरी ऑथेंटिक and realistic. Yeah. Well, it's a very interesting place. Very interesting. It's a very interesting place. अब तो खैर it's more for food and culture. But ये है कि See, I grew up in that vicinity क्योंकि मैं NCA में पढ़ती थी. Of course. So NCA तो अनारकली और उस एरिया के बिल्कुल सामने है. So हमारा तो वहाँ आना जाना, we would sit and paint there on the rooftops. और आपके सामने मैं गवर्नमेंट कॉलेज में होती थी. Really? वहाँ से भी and Punjab University. And Punjab University. वो तीनों इकट्ठे साथ. So हमारी तो आधी से ज़्यादा assignments होती थी on rooftops. And हम बादशाही मॉस्क जाके, every week we would be in बादशाही मॉस्क. Photographing, painting, so that was my hood, that entire vicinity. And but I had never been inside the gullies. Right. Maximum हम यूसुफ अंकल की हवेली और Cuckoo's cafe and that area में होते थे. So going inside the little gullies and meeting people there, and oh my God, but they were so loving. जिस हवेली पे हम शूट कर रहे थे उसके सामने वाली जो हवेली थी, वहाँ एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली, एजुकेटेड बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो रहते थे. एंड वो बेस्टीज बन गए मेरे, और वो मेरी बड़ी हेल्प करते थे. They were amazing. Amazing. Yeah. It's an amazing place. Actually, it's a treasury है. Yeah. बहुत amazing जगह है. हाँ. और बहुत अच्छे लोग हैं. Of course. They're really caring towards each other. Generations. नहीं, मुझे बड़ा डर लग रहा था कि अब मैं यहाँ शूट करने जा रही हूँ. और फिर रमजान था. Part of our shoot was in Ramzan. सबके रोजे होते थे. इफ्तारी टाइम पे neighbors हमें भेज रहे होते थे इफ्तारियाँ. पकोड़े. It was really lovely. Yeah. It really was lovely. Amazing. How do the cast come together? Beautifully. We are like a family. कुछ लोगों की dates नहीं मिल रही थी. Like Nayyar bhai, Nayyar Ijaz was मेरी हसरत. I was like, this character has to be played by मेरा मतलब है कि how did you get the cast? I mean, how did you select these people कि ये किरदार? Well, obviously Ali bhai had already marked कि मुझे मेहरबानो इस character के के लिए चाहिए, यासिर चाहिए for this character, Ayesha चाहिए for this character. Iftikhar Thakur was in it in another character, but we thought that Nayyar bhai would be in that. तो वो dates नहीं मिल रही थी उनकी, and Ali, I call Abu Aliha Ali bhai, so whenever I say Ali bhai, it's the director. तो उन्होंने कहा भाई वो तो बहुत पैसे चार्ज करेंगे नैयर भाई. मैंने कहा पूछे तो सही यार, you can't just assume things. So and I'm very fond of him and he's very fond of me. तो मैंने कहा ये नैयर भाई ये आपने करना है ये कैरेक्टर, और डेट्स भी मिल गई और पैसे भी डन हो गए. And I was very happy to get Qasim Liaquat on board as our look designer and makeup artist. And जितनी films मैंने अब तक की हैं आमना, उनमें अपनी मर्जी का मेकअप आर्टिस्ट तो कभी नहीं मतलब मिलता है लोगों को, but I was okay, अच्छा okay ये टीम है ठीक है. I had never said कि नहीं मुझे ये चाहिए.
Except for no, Karachi se Lahore we wanted Nabilas, we got Nabilas. Yeah, but your look is very authentic in Taxali Gate. I mean, I was really like impressed. I was like, wow. Qasim. But I told him, I said, Qasim, you know, ye karna hai aur ye hai. And he was like, just amazing. It was amazing working with him. So I did not have to worry for once कि मैं डायरेक्ट करूँ मेकअप आर्टिस्ट को कि यू नो कि ज़्यादा ग्लैमरस ना बना दें, ज़्यादा मॉडर्न ना बना दें, बाल किस तरह के होंगे, कपड़े कैसे होंगे, कपड़े जो है वी हैड अ स्टाइलिस्ट, तो ऐसा जो आप कहेंगे, जो चूड़ियाँ, जो ज्वेलरी आपने पकड़ाएंगे मैंने पहन लेनी है. I was like, I'm not going to get involved in this because we have the right people for everything. So I focused on my Punjabi, my lehja, my expressions. And I was like, इससे पहले कि मेरी अम्मी को बाद में शॉक्स मिले जब ये फिल्म बन जाए तो मैं उनको शूट पे ले. I was like, you just come and be on every shoot. शॉक क्या मिलता अम्मी को बाद में? हाँ? क्या मिलता? शॉक तो ना मिलता. That you're playing No. गालियाँ. गालियाँ, right. My character is abusing, but वो obviously पाकिस्तान के लिए सेंसर हो जाएगा. करनी है सारी. हाँ. But festivals के लिए तो हैं. Right. तो अम्मी was very excited also, and she went with me for all my really tough sequences also. Right. Yeah, I wanted to show her. I was like, you come and you see how it's done and how we help each other and how we create characters. And she was very entertained and she became great friends with everybody. So what I'm understanding is that it's a film about consent. It's based in Taxali Gate. It's based on the red light area. But it is also a thriller. It's a thriller Suspense. as well. Okay. Yeah. Okay. But is it? So are you saying, and is the subject matter something like, you know, you कहते हैं कि जी you can you or can you not rape a prostitute? What makes you think that a prostitute is being raped? No, she's not. You said that the girl is assaulted. The young girl is assaulted. But we haven't revealed yet if she's a prostitute or not. But we never know. We're talking about consent, right? By the way, I don't think prostitute is a politically correct word anymore. Should we say sex worker? Is it? हाँ, कुछ मैंने ये देखा है कि आप sex worker. Okay. Cut. आप वहीं से शुरू करें. So, is it okay to rape? So is it at the core of the film, are we saying that is it or is it not okay to rape a sex worker? Because ये भी conversation होती है ना. ये भी है. अब कम होगी, of course we've become more aware and there's more awareness, there's more political correctness. But जहाँ consent की बात आती है, वहाँ होता है. And of course, you know, raping a sex worker or marital rape are such big issues these days. But abhi ek case, exactly, somebody got absolutely punished. Yes, thank God. yes, somebody got convicted for marital rape. So these are issues that have consent at the core. So are these the issues that have been addressed in the film? Yeah. Amazing. Yeah. Amazing. And not just this. Not just this. कि किस हद तक क्या है consent? What is the border line? What is the boundary? Consent क्या है? And that is across the board. मर्दों के लिए, औरतों के लिए, married हो, ना हो, sex worker हो, ना हो, किसी भी field से, industry से ताल्लुक हो. That is being discussed. So there's also a courtroom drama. Nice. ज़्यादा नहीं, but एक part है courtroom drama भी है. Okay. So something to look forward to. Yeah, there's a legal battle too. I love legal battles, but well played out. Well played out legal battles are so enjoyable. And you said it's a suspense thriller as well. So वो भी है. And you said it's commercial. तो फिर I'm thinking गाने भी होंगे. पता नहीं. नहीं, अब ये क्या बात है? सारे कार्ड्स तो नहीं मैं रिवील कर रही. मैं जिस इंटरव्यू में जाती हूँ आना, everyone's like कि फिर आपका डांस नंबर भी है, like टूटी फ्रूटी. मैंने कहा पता नहीं, फिल्म देखें आके, शायद हो, शायद ना हो. नहीं, अब उससे पहले तो कहीं ना कहीं गाने तो रिलीज हो ही जाते हैं. नहीं, maybe we're keeping अच्छा, you're not our going to release cards. the soundtrack. Okay. Do you think films like Taxali Gate will be able to save Pakistani cinema? Because Pakistani cinema is in the doldrums right now. Things are bad. It's really bad. The situation is bad. Yeah, and as a producer, and we have no cinema screens. We have no screens. Like exactly. 63, I believe.
बहुत कम हो गई हैं I इतने think, तो एक शहर में होने जी चाहिए बिल्कुल जो पूरे मुल्क में है। मैं तो बल्कि आई वाज वंडरिंग कि ना आपके फॉर एग्जांपल जो प्रमोशंस चल रही हैं मैंने कहा जहाँ जहाँ मुल्क में हो रही हैं यहाँ सिनेमाज भी हैं कि नहीं नहीं मुझे तो ये नहीं पता नहीं कि सिनेमाज भी नहीं है वहाँ पे लाइक कुछ शहरों में एक सिनेमा है। एक सिनेमा या आई मीन व्हाट इज दैट यार, एक सिनेमा में कितने लोग आएंगे और वो कब, इट्स वेरी सैड, इट इज वेरी सैड। तो आई So डोंट why नो। would Taxali get? I mean, and also there's a big question about how does a film in Pakistan differentiate from a drama in Pakistan? Because ये भी बहुत बड़ा problem हुआ है कि जो फिल्में आई हैं पिछले साल उसमें से कई ऐसी लगती हैं कि यार ये ड्रामा ही होता तो ठीक था और कई फिल्में बनी भी ऐसे हैं कि प्रोड्यूसर्स ने खुद बोला कि हमने we were writing an OTT series or we had a drama in mind and then जब बनाना शुरू किया तो कहा may as well make it a feature film. तेरी मेरी कहानियां के साथ ये हुआ था. So I never saw those. they were very good. They were very good, but when you watch them, you do feel that it could be on OTT or it could be. No, this is a film. This is a film. This is a film, and I guess क्योंकि आप you're going out in the open. Yeah. It's very larger than life. The cinematography is very open and large. Right. And the subject is not something that you can really talk about in On dramas. on television. देखिए ड्रामों में basically it's across the board for everybody. फिल्म आप टिकट लेके जाते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि माई चाइल्ड इज 12 एंड आई डोंट वांट माई चाइल्ड टू वॉच दिस फॉर एग्जांपल. हैविंग सेड दैट दिस इज अ फैमिली फिल्म. दिस इज नॉट, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए जो वर्जन है, इट इज नॉट समथिंग जो आप बैठ के देखें बच्चों के साथ और एम्बैरेसिंग हो. नो, आई मीन आई थिंक सो. Yes, it is not for your 10-year-old child. Right. But it is for teenagers. Right. Because जो इस लड़की की कहानी है वो it is very relevant for teenagers. Of course. Yeah. Of course. Yeah. मैं दो सवाल हैं यहाँ पे. एक सवाल तो ये है कि how do you feel, because like I said you have a world view. How do you feel films should differentiate from what we see on television? Because at the end of the day Aisha, actors भी वही हैं और more or less आपकी crews भी वही होते हैं, cameras भी वही होते हैं more or less. तो क्या फ़र्क है टेलीविजन पे जो चीज़ जाती है? पहला सवाल. और दूसरा सवाल मैं अभी भूल गई हूँ इसलिए इसका I think television is a closed medium more so, right? So you're really going into your actors. तो टेलीविजन पे ज़्यादा आपकी expressions और आपकी आँखों की और आपकी I would say television can be a little more subtle than film. Okay. But no, if the character is larger than life, then it won't be. Yeah. Film में entire body language, surroundings, everything is visible. So it needs to be shot in a way where आपकी हर चीज़ inclusive हो. Then the subject matter, things that people feel not comfortable discussing on television because everybody's watching together. I think TV जो होता है एक family entertainment situation होती है कि आप काम के बाद, स्कूल के बाद सब इकट्ठे बैठ के खाने की मेज पे देख रहे हैं टीवी या आपकी नानी नाना पेरेंट्स चिल्ड्रन एवरीबडी सिट्स एंड वॉचेस इट टुगेदर like bulbule. Yeah, and they've been watching it for decades. I mean, yeah, how amazing is that? It's 14 years. 14 years, absolutely. And counting. People are like, अभी तक चल रहा है. मैं कहती हूँ अभी तक चल रहा है. और उसकी माशाल्लाह रेटिंग्स फिर और reruns नहीं है ये. Reruns भी आती हैं. वो भी आती हैं. But new episode every Saturday. So when do you shoot for these? Every month. The last week of every month is bulbule. आप बहुत खूबसूरत हैं. आप बहुत खूबसूरत ही हैं, मतलब है कि जब हम शूट कर रहे थे हीरा मंडी में in the walled city, तो जब छत के सीन्स होते थे, I'm not kidding, छत के सीन्स होते थे तो हमारी छत थोड़ी ऊपर थी बाकी छतों से, तो सबको पता था यहाँ शूट हो रही है और खूबसूरत आई हुई है, तो वो सारी छतों पे, हर छत पे लोग और बच्चे होते थे and they would be screaming खूबसूरत खूबसूरत. It was amazing. फिर मैंने उनसे कहा कि टक्साली गेट बोलो, और बोलते थे. It's the love that this show has gotten me, and absolutely. It's amazing. Absolutely. It's unmatchable. Yeah.
और I'm just कोई surprised कि they didn't try this again, you know, एक बुलबुले है और sitcoms नहीं है ऐसे और नहीं है, नहीं है बनते रहे हाँ बट फिर बंद हो गए, बंद हो गए फिर शुरू हुए बंद हो गए. This one it's not just survived, it thrived. thrived and how amazing. Yeah, it's I think every character, everybody who's a part of this show, सबको credit जाता है. लेकिन सबसे ज्यादा हिना दिल पजीर को. Absolutely. Momo. Everybody knows. Hina Dilpazir is the heart of the show. Yeah. Momo is the heart of the show. If we didn't have her, I don't think that this show would have been loved and an obsession for so long. Yeah. Yeah, I don't think so. It's amazing. It's the It truth. is. Yeah, absolutely. Absolutely. So coming back to Taxali. Back to Taxali, so you feel that it is commercial and it. I think agar Taxali, I'm not just saying that because I'm a part of the film and I've helped to produce it or produced it. मुझे अभी भी I don't know how to accept. I feel that अगर इस type की films बने और comedies और बने with really good humor, people love humor. Yeah. You know, people love stand-up, people love comedies. तो और जिस तरह के हालात में हम हैं, हमारा पूरा मुल्क, जी बिल्कुल. तो कोई भी We आपको need relief, right? हाँ, We need relief. we need relief. Entertainment चाहिए. क्योंकि न्यूज़ तो आप दिन रात देख रहे हैं, रियलिटी भी आप दिन रात देख रहे हैं, सब देख रहे हैं आप. आपको वो टाइम चाहिए to just let your nervous system relax Yeah. and not be in fight or flight mode. Yeah. तो वो ह्यूमर से मिलेगा. Yeah. तो गुड ह्यूमर बहुत जरूरी है. जैसे बड़े सालों से हम सोच रहे हैं बुलबुले की फिल्म बनाएं. पता नहीं The उसका film क्या version होगा. of Bulbule. पता नहीं उसका क्या होगा. हाँ. So and that then romance. We love romance. Absolutely. Good romantic Absolutely. film. So yeah, a mix of all of that will revive things. There's hope. There's hope. Although I think TV is our stronger medium. Any But day. cinema ज़रूरी है फिर Any भी. day. Yeah. Any. I did not get to see Vakri. क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी और वो शोज के टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहे थे. Did you see it? I did. And how I was enjoyed it. I heard very good I things enjoyed about it actually. Yeah, I thought it was a good film. Could have been a slightly bit shorter, but I felt it was good. It was not bad. And again, material. But it's really, I'm not sorry, I'm cutting you. It's नहीं, great to see female-centric films. Yeah, yeah, yeah. अभी जो पिछली 3-4 films आई हैं, they're all very, you know, like They have strong women characters in them. Absolutely, Yeah. absolutely. Chikkar, Bakri, Nayab, Yeah. and what else came before? Even that? Gunjal, I mean, although it's not female-centric, but the female characters are all very strong. Yeah, it's There great are no, to see there are no that. damsels in distress, you know. Yeah, and Taxali तो हाँ. है ही एक हाँ. empowered women film. जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त. और क्या हो रहा है? Other than Taxali Gate, of course, बुलबुले चल रहा है अभी तक. Your last project was it Hubs on TV? Drama. I think so. है ना? Yeah. That was your last. Yeah. And उसके बाद we heard about Salahuddin Ayyubi की casting. उस पे भी बहुत we've spent a lot of time on that. Yeah. But उसका एक पहले सीजन पे तो काम शुरू हुआ और खत्म भी हुआ, उसकी पहली एपिसोड भी आ गई. But पाकिस्तानी एक्टर्स का काम सेकंड थर्ड सीजन से है. Right. So, I mean, you know, we can't really say much because it's a process. Yeah. And we have to be patient. Yeah. मतलब आप impatience क्या हो जाएगा? Nothing. But I've been doing a lot of other things. You've been doing a lot. Yeah. You're busy with your clothing line? Yes. Abhi Ramzan, this is part of the Ramzan and Eid collection. Yes. So I'm coming out with the next collection. It's called the Khubsurat collection. Nice, nice. जो कपड़े खूबसूरत पहनती रही हैं, क्योंकि ये खूबसूरत का स्टाइल लोगों को बहुत पसंद था. Yeah. So it is all very wearable, कुर्ते और शलवार कमीज और ईद के कपड़े और रमजान के with a little bit of embellishment. Yeah. So वो collection बस अभी drop होने वाली है in like a week or two. And I'm also I just did an exhibition in Dubai for my clothing line. And I'm very actively a part of it because I'm designing. Absolutely.
It's not like I have a team of designers. I mean, I do have 2 girls. Yeah. But सारी जो ideas हैं, सारा कुछ मेरा होता है. And the USP is that it is an extension of who you are, of yourself. Yeah. Basically. Yeah. Which is what it needs to be. Yeah. For sure. So that, then I am working on a project connected with food. Okay. So I think I have read about it. We are launching the Ayesha Omar diet plan. Nice. Which is going to be what? With Evergreen. Okay. Yeah, it's in partnership with Evergreen. And tell us about it. So basically, 10 years ago जब मैं थोड़ी सी अपनी एक health और fitness journey पे शुरू हुई, and my entire philosophy is कि मुझे calories count नहीं करनी, nutrition count करनी है. So nutrition over calories. And जब आप अपनी nutrition देखते हैं और अपनी diet को you eliminate processed foods and junk and तो वैसे ही आपका weight loss होगा. आपका excess fat वैसे ही गिर जाएगा. So I started losing a little bit of weight, and then I started looking like another person. Totally. And everyone was like, wow, what is this? What are you doing? I mean, you've maintained it so well. You're such an inspiration that you that's one thing I'm very passionate about. Yeah, you are. और मेरी बहुत research. अच्छा, सुबह से आपने for example क्या खाया है? मैंने 2 अंडे खाए हैं scramble. और sauteed mushrooms with spring onions. Right. And 2 small gluten-free toasts with olive oil. Organic cacao with maple syrup. Okay. And 2 खजूर. 2 खजूर हैं. और कॉफी भी आप अपनी लेके चल रही हैं. वो तो खरीद के लाई भी थी, वरना मैं कोई भी कॉफी पी. Organic coffee, हाँ. Yeah. So I eat, but जो मेरा diet plan है वो it's gluten free. यानी उसमें गंदम का कोई इस्तेमाल नहीं है. उसकी जगह बाजरा है, उसकी जगह जौ है, उसकी जगह we have almond flour, coconut flour. So लोग समझते हैं, पता नहीं, लोग या तो समझते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ, या फिर लोग समझते हैं कि मैं तो रोटी चावल खाती नहीं हूँ. तो ये कुछ लोग समझते हैं मैं खाती नहीं हूँ, घास फूस. तो भाई फिर मैं how do I work out? 50 kg मैं कैसे लिफ्ट करूँगी अगर मैं कुछ carbs नहीं ले रही. So I eat a lot, but I try to eat smart. Yeah, you're conscious about what you're eating. You're eating smart. Yeah, so protein, carbs, good fats, complex carbs. Right. तो मेरा पूरा diet plan जो है उसमें dairy आपको नहीं मिलेगी ज़्यादा, बहुत minute amounts में, कि जैसे देसी घी या देसी butter, and we are gonna maybe some cottage cheese here and there, not too much, and gluten free and refined sugar free, right? So जो हमारे sweeteners भी होंगे वो honey या dates, natural sweeteners. But if you're diabetic and you're on my diet plan, then we will also remove things that metabolize into sugar in your body. Right. So उसकी versions होंगी. मतलब अगर आप workout कर रहे हैं आपको ज़्यादा calories चाहिए. अगर आपको बिल्कुल deficit में जाना है so it'll be like 1200 calories. If you have a health condition, so then we'll incorporate things. And when is this launching? देखिए, I've been working on it for a year now. Okay. With Kamil and Shamira. And we have finalized mostly everything. क्योंकि सारी recipes मैंने create की. The way I eat. And बहुत research की. I watch a lot of podcasts and I follow a lot of chefs and nutritionists. In fact, people are like, why don't you do a nutrition like diploma? So I think वो भी करूँगी, because I have a lot of knowledge now. मैंने बहुत research की है. तो वो किया, फिर अब सब कुछ final हो गया है. Food tasting भी हो गई है. Tasting all the recipes, tweaking them. So अब बस final phases में है. I wanted कि हम 1st January से launch करें. वो तो गुजर गया. But there was too much happening. Too much happening. The film and this. So maybe a month now. Yeah, after the film, आराम से. Yeah. What's the rush? So ये हो रहा है. Then the clothing brand, the skincare brand. So these 3 brands. Yeah. Then I am working on another concept for a film, which will be kind of a sequel for Taxali, but not really. Okay. And then बुलबुलें चल रहा है.
Then I'm also getting back into music a lot. Right. Yeah. So yeah. और जो number one priority है मेरी अभी, right after the film, is my surgery. मेरी collarbone की surgery अभी What तक. happened? वो जब मेरा accident हुआ था, हाँ हाँ हाँ. I broke 5-6 bones. Yeah. तो एक मेरी collarbone अभी तक जुड़ी नहीं ना. Really? हाँ. So it's caused a lot of problems for the last 8 years. In fact, पूरी film मैंने बहुत I'm pain so में sorry shoot. to hear that. I didn't know that you had a. Ask my crew. मेरी जो shoot थी टक्साली की, इतने pain में there was a physiotherapist on set sometimes because मेरी neck नहीं move होती थी. बहुत pain. So what? Your collarbone never sort of No. got fixed? No, it was negligence from one of the main doctors that I went to. I wouldn't say negligence. I just think wrong advice from him. Which is negligence. I went to 3 people for opinions. And 2 surgeons ने बोला कि immediate surgery collarbone पे होनी चाहिए. एक ने बोला wait करें, देखते हैं कि वो खुद जुड़ जाएगी. तो वो 1 साल बाद नहीं जुड़ी. फिर वो 1 साल अब मेरी सर्जरी पेंडिंग है. और बहुत obscene bad हो गया है. Okay. And the surgery is very complicated. Very. So complicated the doctors are scared now. Really? Why? Yeah. Because you see my collarbone is broken in from the middle. और जो दोनों bones के बीच में gap है वो कोई 1.5 इंच का है. तो उसके बीच में से बहुत nerves और muscle tissue जा रहा है. तो अब उसके through cut करके इसको वापस लाना एंड एक मेरे हिप से बोन ग्राफ्ट निकालेंगे, उसके बीच में रखेंगे, फिर सब कुछ स्क्रू करेंगे. एंड देन माय शोल्डर ब्लेड इज आल्सो dislocated. Okay. So it is bahir. It's been 8 years since you've been Yeah. nurturing this broken bone. Causes a lot Oh of pain. wow. So where are you getting the surgery here? So last year I decided I'm going to go to London to get it done. But it's really expensive. A, it's really expensive. B, I was like, I should be close to home. Right. For post-op, because 2 महीने कोई काम तो होगा नहीं. 2 months I will be not on bed rest, but housebound. Yeah. And then after 3 months, I can start kind of working a little bit. So Dr. Shah, hopefully, Dr. Imran Shah, he was the first person I consulted. And he is a clavicle specialist. Okay. तो अब planning हो रही है कि अब Okay. March में हो surgery. Okay. Well, good luck. I mean, we'll all be, inshallah, it'll go Yeah. well. Our doctors are very competent. Very They competent. are very good. And Dr. Shah is amazing. So yeah, he's warned Okay, me I कि hope देखिए. amazing Dr. Shah can, He's like देख ले scar तो होगा. हाँ. और कुछ disbalance भी होगा. तो war I was scars like, से भाई देखी अच्छे जाएगी. Scars are great. I love scars. Scars are fine. Yeah. Scars are fine. Absolutely. So that's number 1 priority right now. Our health is. Yeah. I mean, उसके बाद शादी करूँगी, फिर बच्चा करूँगी. Okay. Is that like a I was like, before you ask me that No, question. I was never going to ask you that question. I was like, I'll just tell you. I would never ask कि you that शादी से question. पहले ये सर्जरी होनी जरूरी है. I would never ask you that question, but now that you've brought it up voluntarily, is there somebody in the picture? There are candidates. Candidates. Okay. No. There could be. हाँ. But right now, my first priority is my surgery. Nothing else but my देखो surgery. मैंने नहीं छेड़ी ये बात, खुद छेड़ी है. अब बताओ. ये मैंने अपने आप को ये डेडलाइन दी है कि आयशा बेटा जब तक सर्जरी नहीं होगी शादी भी नहीं होगी. तो पहले सर्जरी शादी की भी तो कोई डेडलाइन होनी चाहिए ना कि बस इससे पहले शादी इस साल हो जाएगी इंशाल्लाह. इस साल शादी हो जाएगी. लो भाई आयशा उमर कह रही हैं कि इस साल 2024 मैं हर साल ये कहती हूँ वो शादी कर रही हैं. हाँ इंशाल्लाह. हाँ. मतलब अल्लाह की मर्जी. Right. When the time is right. मुझे कोई जल्दी नहीं है. हाँ. I have since the last interview I have changed as a person. और मैं अब I am a completely different human being than I was maybe 2 years ago. Like how? Like I am just in another dimension. Chilled out. More chilled. I'm not in a hurry for anything. मुझे अपनी ऊपर ज़्यादा एतमाद है. मैं अपनी गट और अपनी इंट्यूशन पे बहुत अब भरोसा रखती हूँ. आई एम नॉट पीपल प्लीजिंग एनी मोर. आई वॉज अ पीपल प्लीजर. आई स्टिल एम थोड़ा सा.
I am trying to form boundaries. Depends which people you're trying to please. If they're friends and family, that's fine. Haan. No, I'm not No. pleasing them anymore because Okay. they always were happy with who I was. Family, yes, mom. Always trying to please mom. ये तो एक ongoing process Yeah. है. तो boundaries भी मेरी कुछ ज़्यादा strong हुई हैं. Yeah, I've been trying to heal all my traumas, पुराने सारे जो एक इकट्ठे किए हुए थे एक सूटकेस में बहुत सारी Yeah. Lot of baggage. lot of baggage, which I decided कि अगर मुझे एक लाइफ पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है तो उससे पहले अपना पुराना बैगेज सारा शेड करना है. And it's very important to do that. Yeah. So trying to do just that. Yeah. Well, good. I mean, I think you're Yeah. heading in the right direction with your surgery. Yeah. So it's all kinds of health, right? Emotional health. Yeah. And it's Mental like, health. Absolutely. I suffered from a lot of anxiety for years. A lot of trauma. A बहुत fear. तो fear की वजह से anger और anxiety भी होती है आपके अंदर. I was very angry towards the society and there was a lot of anger for myself. कि why did I allow these things to happen? Why did I let these people walk over me? तो अब वो anger को you have to let go. वो जो है ना why that I'm letting go. And also disconnecting from people who are toxic and negative. Of course. And not trying to make वो तो amends. बहुत ज़रूरी है. I wish more people would understand that it's okay to break away. It really is. And you need to. Men, women, whoever, friends, Absolutely. past relationships, family members, anybody who is dysregulating your nervous system. और आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं और आपके अंदर एक एजिटेशन पैदा कर रहे हैं. वो एजिटेशन सिम्टम है कि नहीं, दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू. So yeah, I've let go of a lot of people and it's wonderful. It's wonderful. Absolutely. It's wonderful. दिल हल्का हो जाता है. हाँ. Yeah, absolutely. And before that, another word for Taxali Gate, which is releasing in another 2 weeks. 16th of 16th Feb. I'm of so Feb. excited. So excited. This is the first. This was a learning curve for me. हाँ. You know, I'm not. ठीक है, मेरे पैसे इसमें नहीं लगे हुए, इसलिए शायद मुझे इतना वो नहीं है कि अच्छा. लेकिन मेरे दोस्त मेरे बहुत एक he's like my brother, जिसके पैसे लगे हुए हैं, शब्बीर. And obviously I want कि he should make money. So मैं बहुत अपनी दिल से I'm doing everything that I can for the film. It's my baby. But I want to invest. Yeah. And I want to make films that will put Pakistan on the international map. Yeah. कि लोग दुनिया में बात करें कि ये पाकिस्तानी सिनेमा है. Keeping our values and culture and traditions in place. And I don't want to put Pakistan in a bad light. Like ठीक है, reality भी आपने दिखानी होती है, reflection. But मुझे hopeful conclusions दिखानी है. मुझे I don't want it to leave a negative feeling inside of you. Yeah. I want people to come out and see the light and be like, there's a light at the end of this. Because that's what I'm doing in my own life right now. All the negative stuff and all the bad things that have happened. There will be the Javed Iqbal every now and then, but that's a biopic. That also happened. You can't really... That's not fiction. That's not fiction. चलो वो तो एक वो ज़रूरी है to create awareness. Some things are to create awareness. Some things are to start debates. ताकि उस चीज़ पे बात तो शुरू हो. बिल्कुल. And some things are to actually tell people that after dark, it is always darkest before dawn. So there is light at the end of the tunnel. Yeah, absolutely. Promotions का क्या plan है? Are you kicking off any soon? Promotions शुरू हो गई हैं. We're doing interviews and we're going out to colleges and universities. We're doing morning shows. लेकिन क्योंकि फिल्म की डेट बिल्कुल लास्ट मिनट पे डिसाइड हुई तो बहुत सारे एक्टर्स ट्रैवल कर रहे थे. यासिर जो थे वो 1 महीने के लिए अमेरिका में थे, वो अभी वापस आए हैं. तो you haven't seen him much speaking about the film, but he will be now. He will be now. Yeah. So good luck for Taxali Gate. Good luck for your surgery.
Good luck with your fashion brand, with your clothing brand. Diet plan. Good luck with your diet plan. जो मैं खाऊंगी जब मैं घर पे होंगी 2 महीने तो मैं अपनी diet plan And खाऊंगी. you are the best poster child for your own diet plan Yeah. because you're aging backwards. And absolutely. Oh. No, and so well. I mean, aging तो होनी है. मैं तो ये कहती हूँ, but तो how शुरू हो well are गई you है. aging? That's the beauty of it. But let me tell you that I am loving this part of my life. Really. But you know, when you're younger, you're so scared of after 35, after 40. But I'm telling you, life begins after 35. Seriously. It does. Absolutely. I think so too. Yeah. I think it begins after 40, but okay. Okay, yeah. But 35 के बाद वो journey शुरू हो जाता है. हाँ, हो जाता है. 40 के बाद you're like, yes. Absolutely. Wow. Yeah. So don't be scared of 40. 40 is beautiful. 40 is beautiful. Oh, and so yeah. is 50. Absolutely. How's that? Oh, it's coming up. Wow. Coming up, yeah. It's a good time. It's a good time. Absolutely. On that note. I mean, my mother is mashallah 74. Yeah. तो जब मैं उनसे पूछती हूँ, what are you feeling? You know, ठीक है, I know that, okay, aging, but अंदर से what are you feeling? She's like, I still feel like I'm 30. Yeah. I was like, amazing. Amazing. Yeah. Absolutely amazing. Mashallah. Mashallah. बिल्कुल सही है. On that note, thank you. Thank you. Thank you so much. It was a great conversation as always. Looking forward to the diet plan, amongst other things. And of course, we'll stay in touch. We'll be watching the movie. I expect you to be on the diet Of course, of course, of course. Okay, great. Done. ठीक है. Thanks, Ayesha. It's always a pleasure talking to you. Same. Same. Always. Thank you.